That's why this is known as Magna Carta. Now you have to borrow one idea from it. In the next topics that I am going to discuss. Clear? This model will further do what? It will further become better. पहले से इससे क्या होगा? Better होगा. New features will be added, but the structure will remain the same. ठीक है ना? इससे सिस्टम आगे की तरफ जाएगा या पीछे की तरफ जाएगा? Obviously, a little bit progressive. Clear? So इसी structure पे हमें आगे provisions को add करते हैं. That we have to do now. Okay? So the next topic in this series in last class I have already discussed with you that there was a revolt of 1857, and after this there was a fundamental shift in the administrative policies of British in India. Clear? Now what they want to do? Okay, they want to prevent outbreak of any such revolt in future. So they will introduce many administrative reforms. Got it? And what was happening during this time? Woods dispatches in the year 1854. Raja Ram Mohan Roy, active कब है? 1828, Brahma Samaj. He died in 1833. Now what happens here? Raja Ram Mohan Roy was active, and when Raja Ram Mohan Roy was active, Raja Ram Mohan Roy के बारे में मैंने क्या बताया था? Father of Indian Renaissance. He was having a more mature reaction or a synthesized approach of what? Mixing East plus West. और ब्रिटिश पॉलिसी सबसे पहले क्या थी? याद करो, बिफोर 1813 व्हाट वाज द ब्रिटिश पॉलिसी? Promotion of Orientalism. यही था ना? Clear? It was not basically a policy. It was, you can say that at individual level, it was being done, but the company was not allowing Christian Muslims to come, and they were promoting Orientalist groups in India. Raja Ram Mohan Roy was not happy with this. Raja Ram Mohan Roy make demands before the British government that you should not do this. You are promoting only Orientalism. This is not good. You should promote what? Western education also. ये किसकी डिमांड थी? राजा राम मोहन रॉय कि केवल ओरिएंटलिज्म को प्रमोट करने से काम नहीं होगा. एंड दैट्स व्हाई वी कॉल राजा राम मोहन रॉय एज द फर्स्ट मॉडल. बहुत बड़ी बात. यू आर टॉकिंग टू प्रमोट western education. You are making this demand from the British government. So government was already in pressure because the socio-religious reform movement have started in Bengal. Okay, and now the people were making demands that it's government duty and responsibility to promote education in India. It's government duty or responsibility to bring legislations in India so that the social and religious evils could be checked. ये सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की. अब गवर्नमेंट को क्या करना है आफ्टर 1857? इंडियंस को अपीज भी करना है. अच्छा, अपीज करने का एक तरीका तो ये भी हो सकता है पॉलिसी मेजर्स. क्लियर? कि आपको एक मैसेज देना, कन्विंस करना कि इन इंडिया द क्राउन रूल इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियन. और क्राउन ने क्या कहा था? 1858 क्वीन विक्टोरियाज डिक्लेरेशन, 1 नवंबर 1858. क्लास में बताया आपको मैंने. व्हाट वाज द डिक्लेरेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया? that Indian subjects will be treated like British subjects. There will be no any discrimination between Indian subjects and British subjects. ठीक है? भारतीय प्रजा और ब्रिटेन की प्रजा में कोई भेदभाव नहीं होगा. Crown will treat both of them in a similar manner. वादे सच हैं या झूठे हैं? कल अमेरिकन रिवॉल्यूशन बताया था मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास में. झूठे हैं ना? राइट? सो दिस वाज द प्रॉमिस, बट एटलीस्ट दिस प्रॉमिस विल बी विजिबल ऑन पेपर. पेपर पे तो ये प्रॉमिस विजिबल होना ही चाहिए. Now the next development in this aspect is Hunter Commission, जो मैंने last class में शुरू किया था. So I have just given a recap. Now we are going to start from Hunter Commission and its recommendation. This topic, Hunter Commission 1882, submitted its report in 1883. So in books, both these years have been written, 1882 and 1883. ये दोनों ही years होते हैं. Hunter Commission. Okay. Now हंटर कमीशन के बारे में एक और बात मैंने बताई थी कि लॉर्ड रिपन वाज द वायसराय, और लॉर्ड रिपन और लॉर्ड मेयो दोनों अमरीश पुरी नहीं है. ठीक है? दोनों के कुछ अचीवमेंट्स हैं. देयर आर सम इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स. दोज एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट्स मैं अलग से डिस्कस करूंगा. ठीक है? यहाँ पे बस इतना बता के मैं आगे बढ़ रहा हूँ बिकॉज वैसे हम टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे. ऑलरेडी ये टॉपिक चलने वाला है 6 आवर्स. ठीक है? मतलब आज और कल दोनों दिन कंटिन्यू होगा. ओके, सो लॉर्ड रिपन हम छोड़ रहे हैं. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ स्लाइड. ठीक है ना? स्लाइड से डिस्कस करते हैं, और सारे स्लाइड का कंटेंट नहीं नोट करना है,
और स्लाइड भी नहीं डाउनलोड रखना, किसी काम नहीं आता ये डाउनलोड. Write the key points from the slides, develop a good understanding, and which method I follow while teaching, you will know when I will discuss with you Rabindranath Tagore model of education. I follow that. ठीक है, कि भीड़ भाड़ में शिक्षा नहीं होती, टीचर को अलग रहकर स्टूडेंट के साथ काम करना चाहिए. गांधी सेज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ मदर टीचर. मदर टीचर का कॉन्सेप्ट क्या है? द टीचर्स मस्ट बी लाइक मदर्स. स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज द स्टूडेंट्स नॉट विल नॉट बी एबल टू लर्न बेटर. आर एन टैगोर कहते हैं ये बुक्स वगैरह के कलेक्शन से और ये प्रसाद वितरण कार्यक्रम से, नोट से कुछ नहीं होने वाला है. टीचर शुड प्रोमोट व्हाट? डिस्कोर्स एंड डिस्कशन इन द क्लास. आइडियाज आपके पास आए, फिर उन आइडियाज के एसेंस को, क्रक्स को क्या करना है? आपको नोट करना है. गॉट इट? ओके, सो ऑल दिस आई विल डिस्कस विद. ओके, एंड यू विल आल्सो नो कि क्या एजुकेशन का रियल पर्पस होता है. ठीक है, और जब तक हम ये नहीं समझेंगे, जैसे वी हैव मेड सो मेनी एडवांसेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इतनी ज्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर सोसाइटी? दैट वी हैव गाइडेड मिसाइल्स बट मिसगाइडेड मैन इन आवर सोसाइटी. यही तो प्रॉब्लम है. हमारे पास क्या है? गाइडेड मिसाइल्स बट men are misguided. Okay, you see the crimes. And the second irony of the society is that in globalization and this age of consumerism, what we are doing, okay, we should love with the humans, okay, and use the goods for our needs, for fulfilling our necessities. And now what we are doing, we are loving the goods and using the humans. ठीक है, वस्तुओं से प्यार करने लगे हैं और आदमी का, इंसान का उपयोग करने लगे. ठीक है, ये हो चुका है. ठीक है, सो दिस ऑल वी विल एबल टू लर्न व्हेन विल डिस्कस गांधी एंड टैगोर. तो वहां तक इंतजार करिए, पहले ये प्रोविजंस फिनिश करता हूँ, देन आई विल डिस्कस गांधी एंड टैगोर. देखो उस पे क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आया, विश्व भारती मेंस में भी क्वेश्चन आया. क्लियर? सो दिस शुड बी कंप्लीटेड इन द डिस्कशन इटसेल्फ. तो आप रिलेट कर पाओगे, वर्धा को रिलेट कर पाओगे गांधी के व्यूज के साथ. मेरी बात समझ गया ना? ठीक है, तो एक एक चीज को आप रिलेट कर पाओगे. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस कमीशन, दैट इज हंटर कमीशन. क्लियर? So starting from the very important fact for the information. So year I have already discussed with you, year of this Hunter Commission. You all know about the year of this Hunter Commission. Year क्या है Hunter Commission का? 1882. 1882 is the year. Clear? And what was the task of this Hunter Commission? So already there were recommendations of Wood's Dispatch. Wood's Dispatch के recommendations तो पहले से ही from 1854 itself. ठीक है, and these recommendations were applied also. ये recommendations क्या हो चुका है? Apply भी हो चुका है. Now this commission was given a task that it has to do an inquiry or investigation. इस कमीशन को क्या करना था? एक इंक्वायरी करनी थी और इन्वेस्टिगेशन करना था. किस बात की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करनी थी? ध्यान से समझो. वुड्स डिस्पैच में बात की गई थी प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्योंकि वहां पे क्या हुआ था? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को आपने रिवर्स किया था. और जब वो करोगे तो आप एजुकेशन ऑफ द मासेस की बात करोगे, और जब आप एजुकेशन ऑफ द मासेस की बात करोगे तो प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इस तरफ आप बढ़ोगे. तो हंटर कमीशन को ये काम दिया गया कि भाई जो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो मॉडल और नेटवर्क तैयार किया गया है, ये कितना इफिशिएंटली काम कर रहा है, ये रिव्यू करो आप. This was the task given to the Hunter Commission, that it had to examine or investigate the primary and secondary education. Okay, what is the status? What are the challenges before this primary and secondary education in India? And if the government is making a commission which has to submit its recommendation on how this, okay, education system, this is what? Mass education system. Mass education system, how it's functioning, primary and secondary education of India, how it's functioning. तो जब भी आप प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रहे हो तो आप मास एजुकेशन की बात कर रहे हो. इट मीन्स गवर्नमेंट हैज अगेन emphasized that our focus or commitment is what? On the promotion of mass education. मैं कॉलेज से तो लोग नाराज हो गए थे ना 1835 के बाद, आज हम लोग भी नाराज हैं. 15 अगस्त को स्पीच देते हुए मैं कॉलेज को दो चार गाली दे ही देते हैं. ठीक है, तो मैकॉले से तो उस समय लोग ज्यादा नाराज थे, ताजा ताजा नाराज किया था मैकॉले ने लोगों को. तो गवर्नमेंट बार बार ये चीज एम्फेसाइज कर रही है कि हमारा फोकस कहाँ होता चला जा रहा है? प्राइमरी एजुकेशन की तरफ होता चला जा रहा है. ठीक है, दिस इज द प्रॉमिस ऑफ द गवर्नमेंट. नाउ व्हाट वी सी इज दैट these are the concepts that I have already discussed with you, that after 1857 what was happening,
that the East India Company administration was ended. Now who will handle the administrative activities, or you can say that who will be the ruler of India? That will be the crown. Basically East India Company is replaced, but the entire structure will remain the same. Official तो वही रहेंगे ना, कंपनी का सीईओ बदल जाएगा, बस इतना हो रहा है. The missionaries were greatly disappointed with the government policy. अब मिशनरीज को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? इवेंजेलिकल्स को. गवर्नमेंट क्या कर रही है? वी विल प्रोमोट मास एजुकेशन, थोड़ा वर्नाक्युलर्स पे भी ध्यान देंगे, सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल्स ओपन करेंगे, नेटवर्क ऑफ स्कूल्स ओपन करेंगे. अब मिशनरीज के पेट में दर्द शुरू हो गया. क्रिश्चियन मिशनरीज आर नॉट हैप्पी दैट द गवर्नमेंट इज फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस न्यूट्रलिटी. ये नहीं होना चाहिए. एजुकेशन प्लस बाइबल, याद है ना आपको, दैट द गवर्नमेंट इज फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस न्यूट्रलिटी. अब जैसे ही गवर्नमेंट ने अपना अप्रोच ठीक किया तो किसने अप्रोच शुरू कर दिया? क्रिश्चियन मिशनरीज ने. क्रिश्चियन मिशनरीज स्टार्टेड एन एजुटेशन, ओके, एंड फॉर्म द जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन लंदन. ठीक है ना, बिकॉज क्रिश्चियन मिशनरीज आर नॉट हैप्पी. नाउ दिस जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ओके, एक और बात यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, that before 1858 what was happening, 1813 से 1857-58 के बीच में प्राइमरी स्कूल्स एंड कॉलेजेस मास एजुकेशन को प्रमोट करने का जिम्मा किसने लिया था? क्रिश्चियन मिशनरीज ने लिया था. याद रखो, कंपनी के स्ट्रक्चर से अलग. मैंने कहा था द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स ओपनड बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज वर नॉट रेगुलेटेड बाय द कंपनी. वो क्या थी? ऑटोनोमस थी. So the mass education system that was promoted by the Christian missionaries in India was at that time decentralized. वो decentralized था. Christian missionaries were looking after this. अब आप बताओ कि 1858 क्या है? 1858 is what? 1858 what the government did? It centralized all the powers in its hand. The crown did what? It centralized all the powers in its hand. Now the government will come with the education policy, and the government will look after the promotion of the mass education also. And that's why the Christian missionaries are not happy. Now what we see, a General Council of Education was formed, okay, and this General Council of Education, okay, requested Lord Ripon. Lord Ripon was the viceroy at that time, that Lord Ripon should do inquiry into the Indian education system. इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या चल रहा है इसकी इंक्वायरी करो. और टाइम टाइम पे करवाते रहते थे इंक्वायरी. मेरी बात समझ गया ना? नाउ व्हाट हैपेंस, लॉर्ड रिपन अपॉइंटेड अ कमीशन, that is Indian Education Commission. The name of the commission was Indian Education Commission on Feb 1882, and William Hunter was the chairman of the commission. Okay, that's why we say it Hunter Commission, but the original name was what? Indian Education Commission under the chairmanship of William Hunter. Write this. Indian Education Commission. This is the original name. William Hunter is the chairman under the chairmanship of William Hunter. Year is 1882. We don't need to remember the month. Month याद नहीं रखना है, ठीक है ना? Year आपको याद रखना है. Now we are coming forward. Okay. Now what was the objective here? Okay. देखो, Woods Dispatch 1854. इसको क्या करना है? You will have to review it. You will have to re-examine it. Okay. The progress or the position of primary education in India, you have to review it. You have to re-examine it. ये पहले ही आ चुका है, Woods Dispatch. And if any reforms are needed, you have to give recommendation about these reforms. Clear? Then, to inquire into the position of the state institutions and their importance, to evaluate the work of missionaries in the field of education. This also needs to be evaluated because there were many allegations over the Christian missionaries. बहुत सारे आरोप थे that Christian missionaries, in the name of promoting education, what they are doing? They are promoting Christianity. So the commission will do what? Commission will investigate the role of Christian missionaries. अच्छा, जो रिपोर्ट आएगी कमीशन क्या कहेगी कि क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया के लिए बहुत बुरी हैं या अच्छी? They will say that Christian missionaries had great achievements in the field of education. भैया कमीशन कौन बना रहा है? मेंबर कौन है? सब तो अंग्रेजी है ना, ठीक है? तो ये जो कमिटी हम खेलते हैं, यही से तो सीख के आए ना. They will make commission that we are doing what? We are doing an inquiry into the role of Christian missionaries. Okay. Now it will also inquire the government attitude towards private enterprises. याद करो, in Wood's dispatch, what was the point?
that the government will give support or government will encourage those private individuals who want to set up educational institutions, who want to help, who want to come forward, who want to donate land, who want to donate their buildings, ठीक है, तो उनको भी सपोर्ट करेंगे. तो ये भी एक मतलब अप्रोच था कि गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट इंटरप्राइजेस यहाँ पे क्या और बेटर हो सकता है. ओके, सो दिस वाज द टास्क दैट वाज गिवन टू हंटर कमीशन. इट इज वेरी इजी. पहले जो भी हमने वुड्स डिस्पैच में पढ़ रखा है, इसका एसेंस क्या होगा? वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड इन वुड्स डिस्पैच, हियर देयर वाज द नीड टू रिव्यू एंड री एग्जामिन दैट मॉडल, कि उसमें क्या नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं. नाउ this hunter commission will give its recommendations about the development of primary education. हमेशा याद रखना, हंटर कमीशन का मेन फोकस क्या है? यूनिवर्सिटी एजुकेशन और प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ऐसे टेक्निकल चीजें प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं, बट जब आप पूरे टॉपिक को एसेंस को डिस्कस करोगे तो भूलने के चांसेस नहीं होंगे एग्जाम में, अदरवाइज वी विल फॉरगेट. ठीक है, वन लाइनर, टू लाइनर, थ्री लाइनर नोट्स जो होते हैं ना, कि की पॉइंट्स हैं, तो आप उसको रटते रहते हो और एग्जाम में क्या हो जाते हो? भूल जाते हो. जहाँ उसकी जरूरत होती है एग्जैक्टली वहीं भूल जाता है. ठीक है, बाकी समय याद रहेगा, तो ऐसा नहीं करना है. नाउ दीज आर द डिफरेंट एरियाज. ओके, these recommendations or discussions suggestions can be divided into these 6 groups. Now I will discuss one by one and I will give you the essence of the topic. For example, policy. Okay, what is the policy suggestions? So point 1, primary education should be regarded as the instruction of the masses. It should be closely related to the practical aspect of the life of the masses. ये कैसे होगा प्राइमरी एजुकेशन? हाउ इट विल बी रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ मासेस? जब हम प्राइमरी एजुकेशन में वर्नाक्युलर्स का यूज करेंगे. गॉट इट? ठीक है, मेरी बात समझ गया ना? जब आप प्राइमरी एजुकेशन में वर्नाक्युलर्स के को यूज करोगे, then the child will be able to develop his personality or her personality. The same was said by whom? Gandhi also. The same was said by whom? R.N. Tagore also. Okay, so the government is saying here that okay, it will be related, the primary education should be what? Should be related to the practical aspect of the life of masses. Primary education means we are talking about what? Instruction of the masses, or whenever we are talking about primary education, we are talking about mass education. Clear? So if you want to develop all aspect of a child, okay, if you want to develop a kind of practical aspect, okay, in this education system, so obviously what should be done here? Medium of mother tongue. Mother tongue is what? Vernaculars. Vernaculars. It means vernacular should be with the medium at the primary level. Okay, vernaculars medium is important. Okay, and that's why. Plus, the third recommendation is what? That the government should give more help and support to the primary education than before. पहले से ज़्यादा help और support करना चाहिए primary education को, right? Now, the next important point, okay? In selecting persons of appointment to the government post of a lower order, preference should be given to the candidates who can read and write. This point. It means in the matters of employment, if the government is giving job opportunities, clear, and if the government will give preference to even for the lower post, that we will appoint those who can read and write. So this will do what? Okay, this will encourage the people. They will try to learn, they will try to read, they will try to write. तभी तो लोग पढ़ेंगे ना, जब उनको सामने क्या दिखेगा? एक फ्यूचर दिखेगा. If we will be able to read, if we will be able to write, then we can join the services. So this is one idea that the government should do this. That if you are joining any service, even the service of the lower order, you must be able to read and write, and this will encourage and motivate Indian people to get education. And primary education should be focused in backward districts also, especially in those areas inhabited by the aboriginal races, to be expanded by the Department of Education through liberal grant in aid. It is saying that, okay, for marginalized class also, that are far away from the urban settlement, the tribal people, we should also try to educate these people. हमें इनको भी educate करने की बात करनी चाहिए. अब now
ये पूरी बात हो गई ना. नाउ व्हाट इज द क्रक्स, इस पूरी पॉलिसी रिकमेंडेशंस का क्रक्स क्या है? मास एजुकेशन को प्रमोट करना. दूसरा क्रक्स क्या है? प्राइमरी एजुकेशन पे गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देना चाहिए. तीसरा क्रक्स क्या है? कि प्राइमरी एजुकेशन पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में किसको यूज करना चाहिए, विच लैंग्वेज यू शुड यूज, वर्नाक्युलर. तो कहाँ रट्टा मारने की बात है, क्योंकि इसके पहले वुड्स डिस्पैच में प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई. यहाँ ये कह रहा है कि प्राइमरी एजुकेशन पे गवर्नमेंट पहले से ज्यादा फंड दे, प्राइमरी एजुकेशन में वर्नाक्युलर्स को प्रमोट करे, मास एजुकेशन पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए. ये हंटर कमीशन की रिकमेंडेशन. 1882 में कमीशन बनी, 1883 में रिपोर्ट आ गया. किसने अपॉइंट किया था? रिपन. तो कुछ रिपन का इम्पैक्ट रहेगा कमीशन पे, ऑब्वियसली. सारे रिकमेंडेशंस आपको बहुत ही शानदार दिखेंगे यहाँ. अब देखो क्या है, दूसरी बात क्या है, जब मैं आपको रिपन और मेयो पढ़ाऊंगा, अभी तो नहीं पढ़ा रहा, तो आपको बताऊंगा कि डिस्ट्रिक्ट बॉडीज को कैसे डेवलप किया इन्होंने, म्यूनिसिपल बॉडीज को कैसे डेवलप किया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को डेवलप करने में इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, यहाँ पे बस उसका एक हिंट है, और वो हिंट क्या है? ठीक है, मेयो ने आधा काम कर दिया था. यहाँ क्या हो रहा है? द कंट्रोल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन शुड बी हैंडेड ओवर टू डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनिसिपल बोर्ड. प्राइमरी एजुकेशन का कंट्रोल किसको दे देना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनिसिपल बोर्ड को. इससे ये क्या हो जाएगा? ज्यादा डिसेंट्रलाइज हो जाएगा. ज्यादा डिसेंट्रलाइज हो जाएगा तो ज्यादा इफेक्टिव फंक्शनिंग हो जाएगी इसकी. दिस इज द पॉइंट, डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनिसिपल बोर्ड. एंड व्हेन आई विल डिस्कस द टॉपिक, okay, Lord Mayo, Lord Ripon, I will discuss with you that कैसे, which kind of reforms were initiated by Mayo and Ripon. तो डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसिपल बोर्ड के रिफॉर्म्स भी इनसे जुड़ जाते हैं. गॉट इट. द सेकेंड पॉइंट इज व्हाट? लोकल बोर्ड. लोकल बोर्ड, okay, and they will deal with this primary education system. Okay, finance, management, expansion, inspection, all this will be done by the local boards in that local area. तो यहाँ पे इम्फेसिस क्या है कि प्राइमरी एजुकेशन को आपने किससे जोड़ दिया? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपल बोर्ड, लोकल बोर्ड से जोड़ दिया. गॉट इट. ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, जैसे आगे चल के हमने पंचायत का कॉन्सेप्ट क्यों लाया, पंचायत को राइट्स क्यों दिए? क्योंकि वो उस नीड्स को, रिक्वायरमेंट को बेहतर ढंग से समझते हैं कि कहाँ फाइनेंस चाहिए, कहाँ पे क्या पैसा खर्च करने की जरूरत है. सो दिस इज द आइडिया हियर कि प्राइमरी एजुकेशन का कंट्रोल किसको दे दो? डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसिपल बोर्ड को दे दो, लोकल बोर्ड के को दे दो. तो वो ज़्यादा बेहतर ढंग से डिसाइड कर सकते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या फाइनेंसेस, क्या रिक्वायरमेंट है, पैसे को कहाँ स्पेंड किया जाना है, what are the challenges, what are the requirements, where funds to be spent, they can decide it in a in an effective manner. Okay, so this is the needed thing, needed approach. Now the third part, encouragement of indigenous schools. Clear? The commission, again district and municipal board, Indians would be more sympathetic to the indigenous school than the education department and recommended for the work of indigenous schools. Okay, local schools or the indigenous schools. Clear? It has two meaning. First, the school set up by the, okay, individual persons in a particular village, in a particular locality. This is also the meaning of indigenous schools. Schools promoting vernaculars is also the meaning of indigenous schools. Okay, this was done. Okay, same standard of education should be maintained throughout the whole state, and this was an attempt to bring uniformity in the education system. ठीक है कि भाई अगर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 का एग्जाम हो रहा है, तो एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है, पेपर है, ये सब पूरे स्टेट में क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए. सो दे ट्राइड टू ब्रिंग अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द एग्जामिनेशन सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस आल्सो. अब इसमें फंसना नहीं है. कितने कोर आइडियाज आपके पास दिमाग में आए? यूपीएससी के प्रीलिम्स क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो केवल कोर आइडियाज पे वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं. क्या क्या कोर आइडिया? फिर से क्या कोर आइडिया है आपके दिमाग में? प्राइमरी एजुकेशन, दूसरा वर्नाक्युलर्स, तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन किसको देना है? म्यूनिसिपल बोर्ड, लोकल बोर्ड. बस ये कोर आइडिया है, बाकी सब तो यूं ही लिखा हुआ है. आपके नोट्स में इतनी चीजें होनी चाहिए, अब आप आसानी से याद कर पाओगे. नाउ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, अब ये कहाँ ही एग्जाम में पूछेगा, ऐसे ही है. स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है? मैनेजमेंट ऑफ schools, there are some recommendations that ये सब लिखना नहीं. School houses and furniture should be simple. The manager should be free to choose the textbook for their schools. उनको इस मामले में autonomous होना चाहिए. School hours and holidays should be adjusted according to the local needs. Instruction in primary schools should be simplified. Practical subjects like arithmetic, account, mensuration, elements of natural and
physical sciences, agriculture, health should be introduced. Okay, native games and exercises should be introduced for the physical development of students. कुश्ती उश्ती कबड्डी वड्डी खिलाओ लोगों को, तो इससे फिजिकल स्ट्रेंथ आएगी. नाइट स्कूल शुड बी अब एस्टैब्लिश्ड wherever necessary. कितना शानदार प्रोविजन है शानदार प्रोविजन है. गांधी और टैगोर भी तो यही कहेंगे आगे चल, बट वहां पे गांधी और टैगोर वाला पॉइंट हमें याद रहता है, हंटर कमीशन को हम भूल जाते हैं. आर दीज रिकमेंडेशंस गुड और नॉट? यहाँ पे कहीं आपको कमी नजर आ रही है क्या कि स्कूल का मैनेजर डिसाइड करेगा कि कौन से बुक होंगे, है ना, जो हॉलीडेज हो वो लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट की जा सके. गॉट इट? ओके. बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट की बात है, बच्चों को साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को सिखाने की बात है, नाइट स्कूल्स की बात कर रहा है हंटर कमीशन. तो हंटर कमीशन विलेन की तरह तो नहीं लग रहा है ना, अब विलेन की तरह नहीं लग रहा है. बट लास्ट में मैं एनालिसिस बताऊंगा, कंक्लूजन बताऊंगा, तो आप बेटर समझ पाओगे. अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ रिकमेंडेशन? ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स. ठीक है. नॉर्मल स्कूल्स शुड बी एस्टैब्लिश्ड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर. ठीक है. और ये टीचर ट्रेनिंग की बात सबसे पहले कौन करता है? नेपोलियन, फ्रांस में, नेपोलियन कोड में बताया आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेनिंग स्कूल फॉर द टीचर्स. ये नॉर्मल स्कूल क्या होगा? टीचर ट्रेनिंग स्कूल. ठीक है, ये चीजें हैं. फाइनेंस की बात क्या है? ओके, तो देखो डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्ड को ये जिम्मेदारी दे दो, तो वो क्या करेंगे? एक सेपरेट फंड रखेंगे, एंड दिस सेपरेट fund is for the growth and development of primary education. District and municipal board, they will maintain a separate fund, and this separate fund will be used and utilized for the growth and development of primary education. इसके बाद what about the provincial government? Provincial government should grant 1/3 of their total expenditure to the development of local bodies. Provincial government अपने 1/3 expenditure को कहाँ खर्च करेंगी? डेवलपमेंट ऑफ लोकल बॉडीज. और लोकल बॉडीज का काम क्या हो जाएगा? एजुकेशन को मेंटेन करना. लोकल बॉडीज फंड का एक हिस्सा कहाँ खर्च करेंगी? एजुकेशन. एंड द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग, एडिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल शुड मेड फ्रॉम द लोकल फंड. जो लोकल टैक्सेस जनरेट होंगे उससे क्या किया जाएगा? सारा एजुकेशन का खंड जो फंड है इसको मैनेज किया जाएगा. अच्छा, सुन के आपको क्या लगा? लगा ना कि बहुत शानदार रिकमेंडेशन. ठीक है, लेकिन इसमें देखो क्या प्रॉब्लम क्या है? आपने अपना बोझा उठा के दूसरे के सर पे रख दिया. एक लाइन में बताओ क्या किया आपने? 1857 के रिवोल्ट के बाद अगर इंडिया में एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होता तो लोग किसको दोष देते? क्राउन को दोष देते. गॉट इट? क्राउन ने क्या किया? काउंसिल एक्ट लाए, दैट आई विल डिस्कस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट. काउंसिल एक्ट क्या है? द स्टेप टुवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, काउंसिल एक्ट से डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ, और डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे आपने एजुकेशन की जिम्मेदारी किसके कंधे पे डाल दी? लोकल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपल बोर्ड. बट क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पूरी तरह से लोकल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड के हाथों में था? नहीं. क्या फाइनेंसेस के लिए ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट थे? वेर दे कंप्लीटली इंडिपेंडेंट विद रिगार्ड टू द फाइनेंसेस? द आंसर इज नो. देयर वर मेनी ऑब्स्ट्रक्शंस, बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस थे. इवन यू विल सी द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज दैट वर फॉर्म्ड इन 1935. okay, they faced a lot of challenges. The provincial governments that were formed by the act of government of India Act 1919, they faced a lot of challenges. ठीक है, आज भी you will find that the local bodies face a lot of challenges. So how you can expect कि इनको जितना पैसा खर्चा करना है इनको इनके पास मिल ही जाएगा? And if the system will not function better, what will happen? Okay, what the British government will say? ये जिम्मेदारी तो आप ही की है. फंड कहाँ से ले आने हैं? लोकल रेवेन्यू, टैक्सेस. इनसे क्या होगा? लोकल बॉडीज के पास फंड आएगा. तो अगर प्राइमरी स्कूल इज नॉट फंक्शनिंग बेटर, हु इज रिस्पॉन्सिबल? वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. सो दिस इज लाइक ट्रांसफरिंग योर बर्डन ऑन द शोल्डर ऑफ अदर्स. क्लियर? ऑन वन साइड दिस इज कॉलोनियलिज्म. यही होता है कॉलोनियलिज्म. क्लियर? British need what? Moral validation for the presence in India. They need moral validation for their presence in India. That we are in India we are in India as the liberators. और इंडिया में हम इसलिए हैं ताकि इंडियन लोगों को क्या हो? बेनिफिट. मेरी बात समझ गया? और ये देख के अच्छा खासा आदमी कंफ्यूज हो जाए
कि ब्रिटिश इंडिया में क्यों थे, लगेगा यार सही में ये लिबरेटर्स थे, ठीक है, 100-200 साल और रूल कर लिया होता तो कितना मजा आता, ये फीलिंग आने लगेगी, ठीक है ना। सो दे डिजाइन द पॉलिसीज इन सच अ मैनर, बट स्टिल वी कैन से दैट इट वाज प्रोग्रेसिव, ठीक है ना। इट वाज मोर प्रोग्रेसिव देन द वुड्स डिस्पैच 1854, था कि नहीं, वुड्स डिस्पैच प्रोग्रेसिव था कि नहीं, मैकॉलेज मिनट से तो ज्यादा ही अच्छा था, क्योंकि यहाँ आपने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी को क्या किया, ठीक है, उसको एक तरह से रिजेक्ट कर दिया। Hunter Commission is better than the Woods Dispatch 1854 because Woods Dispatch 1854 laid the foundation. उसने एक बेस तैयार किया और उस फाउंडेशन को और बेहतर बनाने का काम किसने किया, हंटर कमीशन ने। ओके, now we are coming to the next topic, next development, major recommendations. I have already discussed all the important part. Now secondary education, there are important recommendations about the secondary education also, clear. So the core ideas I hope you have got, okay, some important recommendations about the secondary education also. And what is that, the government should gradually withdraw itself from the field of secondary education. अब समझ में आ रहा है पॉलिसी, the government should withdraw itself from the field of secondary education and secondary education को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसको दे देनी चाहिए, इफिशिएंट प्राइवेट इंटरप्राइजेस को दे देनी चाहिए। अपना बोझ किसी और के सर पे डालने की तैयारी है, गवर्नमेंट शुड विड्रॉ, okay. And what is the third point, government should sanction grant in aid to improve secondary education, that the government should provide some funds, okay, to promote secondary education, clear. And अब इसमें देखो मॉडल क्या है, that the government will maintain some secondary schools plus the task of maintaining secondary schools should be given to the other enterprises also. कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स भी होंगे लेकिन बहुत सारे स्कूल्स प्राइवेट इंटरप्राइजेस के होंगे। नाउ द गवर्नमेंट शुड मेंटेन सम सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, एटलीस्ट वन मॉडल हाई स्कूल इन वन डिस्ट्रिक्ट, क्लियर, वेयर मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऐसा होना चाहिए जो गवर्नमेंट ने सेटअप किया हो। बाकी स्कूल्स में हम किसकी हेल्प ले सकते हैं, प्राइवेट इंटरप्राइजेस की। एंड टू इनकरेज द प्राइवेट इंटरप्राइज द कमीशन सजेस्टेड दैट द मैनेजर्स ऑफ एडेड स्कूल्स आज भी सुना होगा आप लोगों ने, आप लोगों के साथ किसी के यहाँ होगा भी एडेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस, क्लियर। सो द एडेड स्कूल्स का कॉन्सेप्ट यही है कि गवर्नमेंट विल गिव यू अ फंड, you will manage, right, and that will be what, government aided school, ठीक है। तो aided schools might charge less fee in comparison to the neighboring government school, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आते हैं, but what is the essence of this entire discussion, that the government is doing what, transferring its responsibility of giving education, clear, on the shoulders of the private players, clear, transferring its responsibility to the municipal board to the local board, ठीक है, वो उस responsibility को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। Now for qualitative improvement there are many such recommendations, clear. For example, curriculum at the secondary stage should be bifurcated into A course and B course, ये लिखना नहीं है, this will not be needed, okay. A course prepared for the students who go for the higher study in the university, and B course should be practical type of course that will prepare them from commercial and non-literary studies. यही बात तो गांधी कहते हैं, पर्पसफुल एजुकेशन, गॉट इट। ऐसा नहीं है कि गांधी और टैगोर ने ही कहा, ये लोग भी बड़े बुद्धिमान, दे आर सेइंग व्हाट, ए कोर्स एंड बी कोर्स। बी कोर्स मींस व्हाट, प्रैक्टिकल एजुकेशन, skill based education, that is what B course, got it। A course और B course की बात की, and what is this B course, this B course is practical education, skill based education, that was the B course, clear। Then the commission did not refer to the use of mother tongue as the medium of instruction at the high school stage, यानी कि प्राइमरी स्कूल में क्या होना चाहिए, मदर टंग, बट हाई स्कूल और इसके बाद जो हायर स्टडीज में जाओगे तो यहाँ पे मदर टंग वाज नॉट रिकमेंडेड एज द मीडियम ऑफ एजुकेशन। सो वाज द प्लान ऑफ एंग्लिसिजाइजेशन स्टिल कंटिन्यूड, यस और नो, यस। हाई स्कूल में क्यों नहीं हो सकता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्नाक्यूलर्स या तो लोकल लैंग्वेजेस, दे आर सेइंग दैट प्राइमरी लेवल पे रहेगा, बट हायर लेवल पे, हायर सेकेंडरी पे या फिर higher studies में the medium of instruction will be English. So did the British have gave up their plan of Anglicization?
No, they are still trying to subjugate Indian culture, Indian language, Indian education system for the for promoting the needs of Britain. And this is colonialism. What is colonialism? When one nation's interests are subjugated to the another nation interests. Okay, one nation interests are subjugated. For example, India's interests are subjugated for the for promoting the interest of the parent country, that is Britain. And when we talk about the interests, what could be these interests? So these interests could be political, administrative, economic fields, education, say social, culture, religion, everything will be subordinated. सबको subordinate किया जाए. This is the basic idea here. Now, new universities were set up as a result. Hunter Commission कब है? 1882. Okay, and what we see, Punjab University and Allahabad University were set up in the year 1882 and 1887. हालांकि ये पंजाब यूनिवर्सिटी कमीशन की रिपोर्ट ही 1883 में आई, but this we can relate that the Hunter Commission and Punjab University and Allahabad University were set up as a result. Now, the next part is Indian Universities Commission. Okay, in 1902. Okay, and this commission submitted its recommendations, and the recommendations became an act, and that is known as Indian Universities Act of 1904. Clear? Now we have to discuss Indian Universities Commission and Indian University Act. Now, who was the Governor General or Viceroy here? कौन था? ये तो बड़ा आसानी से आप गेस कर सकते हो. गुड, लॉर्ड कर्जन. और कर्जन किस बात के लिए डिटरमाइंड था? कर्जन was determined to suppress the growth of nationalist activities in India. We all know this. Curzon took an important decision. Curzon ने एक important decision भी लिया था. And what was that decision? Decision of partition of Bengal. We all know this. Now, this time, this Indian University Commission has been formed, okay, as a result of recommendations of Lord Curzon. Clear? And what was the purpose? Okay, so this commission was given the task that it will submit its recommendation for the reforms in university education system in India. Okay, reforms in university education system. आप एक बात बताओ कि at this point of time, okay, between 1900 and 1905, the growth of nationalist sentiments were high or not? Yes. After the formation of Indian National Congress, clear, we can say that that was an organized expression of confederation of nationalist feelings and sentiments of the Indian people. ठीक है ना? तो वो nationalism boost हो रहा था. Okay, anti-British sentiments were being promoted. और किसी भी रिवॉल्यूशन का आधार क्या होता है? यूनिवर्सिटी कैंपसेस, कॉलेज कैंपसेस, यही होता है ना? So what the government will try to do? The government will try to increase its control over the universities. Clear? So what what the commission is asked to do, to give the recommendations, okay, about the university education in India. And the chairman of this commission was Thomas Raleigh, and that's why this commission is also known as